Yeah, a very good morning to all of you. Welcome to Abinash Pathshala. Samastu welcome karibi आज GS ର quick revision session को. I hope I am audible and visible. समस्त टिके confirm करो कि तुमने मते ठीक से सुनी पारछो ठीक से देखि पारछो. এটা ଗୋଟେ series of session जोड़ा मु start करछि recently and एटा target हमरो OCS exam को नेकी अछि. डेट तुम माने समस्त जानछो 15 तारीख को अच्छी एंड आम पाखे आराम से टे टाइम भी मिलगला तो ये टाइम को ठीक से यूटिलाइज भी करार अच्छी. ठीक अच्छे स्टार्ट करवा. लास्ट सेशन रे हमें फंडामेंटल राइट्स को डिस्कसन करचु. आज आम फंडामेंटल ड्यूटी सहित डीपीएसपी को डिस्कसन करवा. डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एफडी ता सहित एफआर फिक्स ये क्वेश्चन आसब ही आसब. तेणु ये तीन चैप्टर तुम बहुत इंपोर्टेंट रहा. येस वेरी गुड मॉर्निंग डियर. सो let me share the notes with you. मैं start करी. Just a second. Yeah, very good morning. Very good morning. Yeah, is it visible? समस्त को देखा होची. এটা স্টাডি আইকিউর বুকটা গাইজ এসআইপি सक्सेस इन प्रिलिम्स वाला बुकटा. এই বুকটা बहुत ही बढ़िया देइची. शॉर्ट एंड प्रिसाइज मैनर रे सब जिंस को देइची. फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक गाइज. इफ यू वांट टू परचेज यू कैन बट आई डोंट थिंक तुमको एबे परचेज करियो पड़िबो. ऑल क्लियर. या थैंक यू. फर्स्ट तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर डिफरेंस वेरी इंपोर्टेंट. आग को से जिनस रहा तुम देख ये जिनस फर्स्ट जिनस देख मुझे यूट्यूब पढ़ाई चाहिए यूट्यूब डिस्कसन करने को चाहिए बिकज हियर वी कैन डिफरेंशिएट कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर कौन डिफरेंस रहा. वेरी बेसिक डिफरेंस इज फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स फॉर द सिटीजन्स है. दे आर जस्टिसिएबल इन केस ऑफ वायलेशन. तुम मैंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जाई पड़तलो. बट हियर डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर व्हिच आर डायरेक्शन टू द स्टेट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज. से माने जते पॉलिसी फॉर्मुलेट करिवे दैट टाइम दे हैव टू. सो दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर. दीज आर जस्टिसिएबल इन नेचर. दीज आर नॉन जस्टिसिएबल. बेसिक डिफरेंस इज दिस. द सेकेंड इज दिस इज फॉर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. जदि हमें सिटीजन्स मान कथा देखा ताहले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट हियर इकोनॉमी और सोशल डेमोक्रेसी विषय डिस्कशन हो. दीज आर नेगेटिव इन नेचर बिकज एटा प्रोहिबिट कर स्टेट को फ्रॉम डूइंग समथिंग. स्टेट ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस पुट कर राइट. बट हियर दीज आर पॉजिटिव बिकज एटी रिक्वेस्ट स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स. स्टेट किसी जिनस करने स्टेट को किसी जिनस करने प्रवर्त हो. तेणु डीपीएसपीज आर पॉजिटिव इन नेचर. फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर. यार लीगल सेक्शन एगोटा लीगल सैंक्शन रहिबो एगोटा मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन रहिबो. बिकॉज लीगली माने तुम माने डायरेक्टली मूव करि परछो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को. बट यार मोरल एंड पॉलिटिकल जिनस रहिबो. वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एटी इंडिविजुअल कथा पड़छि इंडिविजुअल राइट. बट एटा वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी कथा पड़छि सोशलिस्टिक इन नेचर. बुझी पारछो ना. सेठी तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप कथा पड़ी. एटी ओवरऑल कंट्री रो डेवलपमेंट वेलफेयर कथा पड़ी. ठीक अच्छे. एंड एनफोर्समेंट ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड. नो लेजिस्लेशन नीडेड. सम एक्सेप्शंस लाइक आर्टिकल 17, 23 एंड 24. बाकी नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन बिकज तुम समस्त जान जिते स्टेट गोटे माने सेंटर जिते ये स्टेट माने राज्य नुहे बोले देश जो गोटे पॉलिसी फॉर्मुलेट कर से टाइम रे यही जिनस गुड़ा देख कहीकि डीपीएसपी अच्छी. तो डीपीएसपी आर सिंपली तुम्हें बुझी पार एमती जे एगुड़ा गोटे डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर आमर थिले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से माने जो पॉलिटिकल लीडर मानक सर्टेन डायरेक्शंस देइचंती एई आर्टिकल 36 रु नहीं कि 51 भितर. So basic thing is DPSP can be defined as ideals to keep in mind
while making policies and enacting laws. They are constitutional instructions to the state in legislature, executive and administrative matters. So legislative, executive and administrative matters रे these are constitutional instructions to the state, right? Simply जदि तुमको कहीं पचारला कि DPSP कौन बुझा ताले DPSP तमे एमिति बुझी पारिबो, ठीक अछि? Next is provision found in part 4 of Indian Constitution article 35 ରୁ नेकी 51 भितर मेंशन है इस नमस्कार resembles instrument of instructions of Government of India Act 1935 to the Viceroy. Government of India Act 1935 prior to our independence जो आस्थिला सेइतरे जो instrument of instructions थिला सेटा को resemble करूची. Inspired by the Irish Constitution, this feature being borrowed from Ireland Constitution. तो आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन रो ये फीचर टा हमें बोरो करिछु. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड एज नोबेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पचारे पिले कि डीपीएसपी को नोबेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए डिस्क्राइब करछंती तो तमे लिखि परिबो B.R. अम्बेडकर, ठीक अछि? नेक्स्ट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज फिलोसफी, सोल, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो एफआर और डीपीएसपी मिसी किरी ताको डिस्क्राइब करा जाउची केमिति ना फिलोसफी, सोल आउ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर नॉन जस्टिसेबल नेचर, ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर लुनी. यूज्ड बाय कोर्ट टू डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट DPSP can be considered as a reasonable restriction in relation to Article 14 and 19. एटा होची गोटे पॉइंट दिस यू हैव टू रिमेंबर जे व्हाइल यू नो सुप्रीम कोर्ट जते बेले किछि जिंस कंसीडर करियो सेते बेले एटा को डीपीएसपी को रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नै परिबो इन केस ऑफ आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 19, ठीक अछि? समझ तो क्लियर? एटी किछिटा राइट्स को ए जो आर्टिकल्स कोडा को अछि ताको तीनटा कैटेगरी डिवाइड कराइछि पिले, तीनटा कैटेगरी डिवाइड कराइछि. देखो, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट एटा को क्लासिफाई करा जाइछि. मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन करनी तार प्रिंसिपल को नहीं कि क्लासिफाई कराइछि. गोटे होछि सोशलिस्टिक, गांधीयन आउ लिबरल इंटेलेक्चुअल. सो ये आर्टिकल्स गुड़ा को मन रखिबो लाइक 38, 39, 39A, 39B, 41, 42, 43, 43A, 47 सोशलिस्टिक है माने 40 हे गला 43 एटा पचारे पिले एटा पचारे देनो एटा मन रखिबो 40, 43, 43B, 46, 47, 48 এই যে ছটা আছে এটাকে গান্ধিয়ান প্রিন্সিপাল কোয়া যায়. আউ রইলা তোমার আর্টিকেল 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 এমান को লিবারেল इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल কোয়া যায়, ঠিক আছে? तो देखो डीपीएसपी रे कौन कौन ऐड हैला को अमेंडमेंट रे ऐड हैला दिस यू हैव टू रिमेंबर. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी ना दिया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने समझते जानी थी. एइथरे आर्टिकल 39 ऐड हेतिला टू एन्श्योर टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. 39A ऐड हेतिला टू प्रमोट इक्वल जस्टिस to provide free legal aid to the poor. 43A participation of workers in the management of the industry. 48A safeguarding forest and wildlife. एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची बेले 42nd अमेंडमेंट रे एमान को भितरु कोउटा ऐड करा जाइतिला तो 39, 39A, 43A आउ 48A, ठीक अछि? नेक्स्ट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सेटर आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर for the promotion of welfare of the people एटा ऐड हेतिला. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो मैंने समझ जानछो एटा गोटे अमेंडमेंट जोथरे एजुकेशन को इंपोर्टेंस देकी तीनटा पार्ट रे ऐड कराइतिला. दैट मींस पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A रे ऐड कराइतिला. चेंज द कंटेंट ऑफ आर्टिकल 45 द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो 6 years एज, ठीक अछि? एंड द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड कर पिले ये क्वेश्चन भी आसे एग्जाम रे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कथा कोउटी कोउटी मेंशन हिच. सो एफआर डीपीएसपी दुईटा रे एफआर रे कोऑपरेटिव सोसाइटी अछि तो को आर्टिकल तुम माने कहबो. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जिबा माने आर्टिकल्स कोडा को जिबा. यारे सब आर्टिकल्स इंपोर्टेंट नाही
जो गुड़ा पचार शुण जे आर्टिकल 38 वेरी इंपोर्टेंट गाइस एटा मन रखिबो स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल तो पचारे पिले वेलफेयर ऑफ द पीपल को आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है देन पिले आर्टिकल 39 रे काफी सारा जिंस अछि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हे गला इनो मटेरियल रिसोर्सेस हे गला प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हेल्थ हे गला ऑन हेल्थ हे गला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हियर इट इज रिटन ठीक अछि 39 ए होची इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 40 वेरी इंपोर्टेंट गाइस वेरी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 41 होची राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन आल्सो 43 लिविंग वेज कथा अछि ओके 43 ए 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेची दिस इज फॉर वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 बी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एबे पढ़ले हमें 44 तो सब एग्जाम रे पचार यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बिलो 6 इयर एज एटा उठे पढ़िबो हैला बिलो 6 इयर्स एज देन बिले तो माने देखिबो जदी 47 दर 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हैला 48 देन 48 ए तो ऐड हेची तो माने समझ जानछो 48 ए होची 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेची हैला देन 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और 51 होची प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी गाइस आ गोटे क्वेश्चन भी कहि दोस तमन को गोटे क्वेश्चन पचरे कि को अमेंडमेंट रे डीपीएसपी रे एडिशन हेतला 42nd 44th 86th 97th मन रखिबाटा हैला ठीक अछि अरे डीपीएसपी हे गला क्लियर समस्त को एति की जिंस जानी थिले सब क्वेश्चन तमे करि परिबो हैला बुझियला तो एटा होची सर्टेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोटा तुम माने देखि दबो आई विल शेयर विथ यू गाइस ए गोटा सर्टेन केसेस सर्टेन अमेंडमेंट्स जो दरे डीपीएसपी ऑफ फंडामेंटल राइट्स को नहीं की है ना जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी भितरे एटा सबले चलतीबो हां कि नहीं ओके नाउ विल कम टू फंडामेंटल ड्यूटीज गाइस बहुत ही छोटो पार्ट है पार्ट 4 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा 1950 26 जनवरी को नथिला जेतेबेले लागू हैला हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड हैला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा मेंशन नथिला बेले देखा जाउछि ना समस्त देखा जाउछि तो बेले सो दिस इज ड्यूटी conveys a sense of moral obligation and commitment to someone and or something. Initially, the Indian Constitution did not contain provisions related to fundamental duties. They were added later to the Constitution. This addition was done to convey that rights and duties are interrelated. For example, simply, mu तुमको किसी जदि अधिकार देछि at that time, in return, I need all of you to make sure that tomar भी किसी obligation towards me रही right let's suppose for example you are paying me for the offline classes let's suppose गोटे बैच तुम किनल मत पे कल सो तुम पे कल सो मोर भी किसी obligation रहिला मोर भी किसी obligation सही वाले जिंस जे जदि कॉन्स्टिट्यूशन तुमको किसी अधिकार दउची राइट दउची एट द सेम टाइम इट नीड्स कि तुम भी किसी ता प्रति ड्यूटी करो. So this is it. Okay. So if someone performs his or her duties properly, automatically safeguards the basic right of others. Simply बुझी पारछो. जदि जणे निजर ड्यूटी ठीक से कला ताले अन्य जन को राइट को सी प्रोटेक्ट करिवो. हां कि नहीं? ये सुनो. नाले कहिबार अधिकार मते अछि कहिबार अधिकार तुमको अछि जे जहा को इच्छा जहा कहि जिबा. सेमति तो होबन ना. अरे बुझी होछि ना नै. ओके. Coming to the important facts जे फर्स्ट तो भाई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नथिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड हैला पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हैला ठीक अछि. स्वर्ण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन थिला यूएसएसआर रो कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बोरो करिछु फ्यूचर आउ जो लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीटा एटा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे ऐड हैला to provide opportunity for education to his child between age 6 ରୁ 14 आउ थरे कहूँ
एफआर आउ एफडी रे 6 रु 14 मेंशन अछि डीपीएसपी रे बिलो 6 ईयर अछि बिलो 6 ईयर ठीक अछि बुझी पाला हैं शाबाश तो एटा 11th फंडामेंटल ड्यूटी टा ऐड हेतला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे नॉन जस्टिसेबल इन नेचर applicable to citizens only very important guys only citizens nature कौन moral और civic duty आउ फंडामेंटल ड्यूटीज रो लिस्ट को गोटे बढ़िया हम जदि तुम तुम वॉल रो चिपकई पारिबो बिकॉज डायरेक्ट या ऊपर क्वेश्चन सिविल सर्विसेज रे पचारुची को भी एग्जाम एबे डिफरेंट एग्जाम्स रे भी पचारिबा स्टार्ट करलानी कि एमान को भीतर कोटा फंडामेंटल ड्यूटीज नुहे कोटा फंडामेंटल ड्यूटी हैला देखो 11 ड्यूटी मेंशन इज द फर्स्ट वन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम नॉट द नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम बाजिला माने तुम माने छिड़ा होचो दिस इज योर ड्यूटी ओके नॉन जस्टिसेबल दिस डजंट मीन दैट लेजिस्लेचर चाहिए तुम ऊपर राइट ये जो फ्लैग रो कोड अछि हमर किछि केही भी निजो घर पर माने एमते नै कि तुम भाई पैट्रियोटिज्म देखै कि निजो घर पर पताका उड़ेबो इंडियन फ्लैग केते सारा रेस्ट्रिक्शंस अछि सेठी राइट सो नेक्स्ट इज जो जो तुम माने देखि दिबो बहुत सारा केसेस हेतिला एमती जे मूवी हॉल ले आगरू केते जगह रे एठी तो ओडिसा रे कहीं ये कहू राउनी महाराष्ट्र देखी कि यार मूवी स्टार्ट हवा आगरू नेशनल एंथम प्ले हुए तो एट द टाइम कौन हुए ना सब लोग छिड़ा हुआ टू शो पैट्रियोटिज्म ओके बट किसी जन था जो मैंने बसी था भी तो हुए कौन ना झगड़ा हो जाए थर थरे किसी लोग टे बेसी भावुक होकर बाड़ा बाड़ी कर दिखती जी बसी थाए बसचु कहीं छिड़ा है ना पाकिस्तानी की एमती कहीकि बट लिसन केयरफुली गाइस दिस इज समथिंग जोड़ा निज भीतर देख जमी मु सिंपली कहे लव टुवर्ड्स समवन क्या हेट करवा क्या रेस्पेक्ट दबा एगुड़ा सब है ना बाय डिफॉल्ट सेटा माने तांको भीतर सेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज तुम जबरदस्ती करि परिबनी जिंस ऊपर तो टू रेस्पेक्ट द नेशन टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम जबरदस्ती करी हबनी इट इज अप टू समवन राइट इवन एथरे भी कोर्ट भी एथरे कहिछि एमती कि जदि जने साइलेंटली बसी तो नो प्रॉब्लम डिसरेस्पेक्ट करूनी सी इट इज ड्यूटी नॉट यू नो दिस इज सम ऑब्लिगेशन नॉट लीगल ऑब्लिगेशन आर यू गेटिंग माय पॉइंट नेक्स्ट इज टू फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टू प्रोटेक्ट सोवर्निटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया to render national service when called upon to do so, to promote common spirit of brotherhood amongst all Indians, and to renounce practices derogatory to the dignity of the women. To respect the women, actually empty likhi diye, but here listen carefully, to renounce the practices derogatory to the dignity of the women, to preserve rich heritage, to protect national environment including forest, lake, wildlife. This is also there, 48A. Confuse of जिनस to develop scientific temper, humanism, spirit of reform and inquiry, right? To safeguard public property, right? To strive towards excellence to all sphere of individuals, and the last one, this is added, duty of the parent or guardian to provide opportunity for the education to his child between the age of 6 to 14 years. Clear? So this is it. एटा होची कथा आज जल्दी सरीगला गोटे 20 मिनिट सेसन आज आउ बहुत जल्दी सरीगला 9 डेली लाइव आसबि आज टी लेट होगा मत आसु आसु तेणु 9 लाइव आसबि आशा कर तुमको ये सेसन गुड़ाक बेनिफिशियल तुम जो मैंने लाइव रोच जो मैंने रिकॉर्डेड भी देखो तुमने निजर वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कर आउ कौ वे तुमको दरकार जिनस गुड़ाक है मु निहाती तुमको सेमती प्रोवाइड करने को चेष्टा करी ना मुझे ट्राई करी तुमको बेच देवाई Do share with your friends guys. Thank you very much for this lovely support. देखा नेक्स्ट सेशन रे. Thank you very much for watching. जय जगन्नाथ.